Okay. I'm sorry, I just didn't start the recording before. Okay. Now we were talking about the introduction part. So he is going to be asking some general questions, general information questions about you from you. Okay, that can contain about like what is your name, or how should he call you, or how you want you to be called. And then he will ask you some hobbies about you, like what are your hobbies, or where are you from, and maybe he can ask you the simple question like this, like where are you from, or he can also modify his questions in a contextual way, like he can ask you in the way like what is the speciality of your area, your country, or what do you think, or why do you think that people should visit your area in this way. This is the way how can they ask you the questions, different questions, but not directly, indirect. Okay. Then comes the academic portion or the English portion. Now over here, he can ask you about your language learning. Like, why do you want to learn English? Like, what is the purpose of learning English? Second question can be like, what were the difficulties that you were having while learning English? Or maybe, how do you think that English can help you? Okay, these kind of questions regarding your language learning. Got it? Till yet? Till here? Do you get? Yes. Okay. Now moving towards the university portion. Like, which university have you applied for? This is a question that he asks most of it, like most of the time. Then Most of the well, times. yes, he will ask why Oxford test? Like why not ELTS, like IELTS? Why not PDE? Why not Languagecert? Any kind of question. Like this question is must that he has to ask. Okay, there is another question as well. Like why university in UK? Like why do you want to study in UK? Why not any other country? Okay, these are the like general questions, or you can say like specifically some questions about different areas that he can ask you in the introduction portion. Now what is more you can say that it is interesting fact is that the introduction part is not marked. It is not marked, but it is very necessary because it is the first impression that you are going to show on to your examiner. Like if you are fluent and if you are reason like good reasonable person and you are putting good reasons in your answers, it means yeah that you had a good impression of yours on your examiner. So he will be at that time he will decide if he will be going easy on you or a bit strict on you. Okay. Now this was the introduction part. Now moving towards the second part, that is presentation. Presentation. Yes, presentation. Now presentation part, we also have got some tricks to do it. Now presentation part needs to be focused on more. Now here, let me tell you something that when your test is going to start, he will provide you the topic of your presentation 15 minutes before your presentation, before your test. Like for example, if the test is going to start on 4:15, and he will provide you the test, the presentation topic at 4, like 15 minutes before your test beginning. Okay. In 15 minutes, what you have to do is you have to make notes about that topic. For example, if the examiner is giving you a topic, technology, what you have to do is you have to write it over there, write it on your notepad, or if you are making notes on the sticky note or whatever, it is up to you. You have to make notes of it, and within those 15 minutes, see what you have to do is you have to rehearse that presentation as well, so that you can easily manage it in front of the examiner. Okay. Now, while doing the presentation, now this was before the test, that how are you going to prepare your presentation. Now,
while doing the presentation, what you have to do is you have to be careful about two things. One thing is the timing of the presentation. Timing is, yes, Nabil, is everything okay? Yes. Okay, your camera is off. It's happened because of the internet. It is working now? No, it is not. How to check? Grilled view expert. Let me check. Okay, are you getting me till here? Yeah. Okay, fine. Okay, if you have any question or query right now till here, you can ask me regarding introduction part or presentation part. Till here, like No, till I the think like both things are clear. Like for the introduction, they generally ask the general question that is related to me. Like simply, yes, what's your hobbies? What you do in your free time? And like where you live. yes. Sometimes they And ask about the introduce yourself qualification. as well. Like Have you that. can, he can also ask about a detailed introduction of yours as well. Mm, Like what is the job that you are doing, or it is not that he will be asking you, he will ask you like introduce yourself, and over there he can mention by his gestures mm, like he needs a more introduction. Like if you are going to say that my name is Nabil Khan and you can call me Nabil, and he will show a gesture maybe that to show he wants more than you, more from you. Like not that, that is not it. You need to put more details in it. Okay, so you can mention your job there, where do you live, or where are you currently living, and where were you living before, and what is your education, what who is in your family, like this, like the precise and narrow introduction. That's it. mm, Okay, now moving towards the presentation, the presentation itself, like how are you going to present? Okay, first of all, the timing. Now, timing is 3 to 5 minutes. Like you mm, have 3 to 5 minutes to speak, no less than three and no more than five. Like if you are speaking less than three, it means that your test or your presentation is not good, not validate. And mm, if you are going to speak more than 5 minutes, he is going to stop you either. Like he will say that just stop here and he will move towards the other part. Okay. mm. Got Now, it. while presenting your topic, what you have to say in the beginning, that you have to start it like this. Like now I am going to begin my presentation and the topic of my presentation is this, like this. And when you are Mm, going to end it, you have to end it like this. Like it is a template, you can say, that you have to follow at that time. Okay, and the final mm. time template is that you have to say, this is the end of my presentation. If you have any query, you can ask me. We Okay, can ask. Yeah. that's it. This is the presentation part. Okay, Mm-hmm. and now the third part is essay. Now, this essay is the one, this is the part that you are already done with in your LRW portion. Like Mm, you have already written it. What you have to do is you have to prepare it. Like actually, if you are a novice student and you don't have any instructor or you are doing it by yourself, it is like many students don't know that the essay is not provided to you to be prepared to you, so that you can prepare it like for 6 or 7 or 8 days or more than 15 days as well. Like between LRW of Oxford and the speaking module, it like it is almost a lot of gap, like 15 to 28 days as well. Okay, so essay, what you have to do is you have to be careful about the synonyms. Like you have to be prepared about the synonyms, words like vocabulary. Okay, simply we say mm-hmm. vocabulary, the sentences, the context. Is Mm-hmm. everything okay, Nabi? Yeah, I'm just checking the like they can share you the my speaking like the my essay part to you. I will. You can send it to me through WhatsApp. But after I'm done with my lecture.
Okay. Okay. Sorry. Yeah. Hmm. Okay. Yes. So, in essay portion, you have to be prepared about your vocabulary, the context. Now, context means the concept. For example, for example, I don't know in the India, but in English we say but means lekin, par, like this. Yeah. It's a it's conjunction, right? But in Conjunction. Yeah. Pakistan, but is a caste, like Rajab Bhat, Munib Bhat, like they are. It is a caste. But in Punjabi Hmm. language, but means bal, or it means not. Hmm. ठीक है? So this is how it is. Okay, so it is a context of a word in different scenarios or in different countries, right? Like in English, it is something else, and in Urdu or Punjabi, it is something else. Okay. Yeah. So let's move towards the next part, and that is he can ask you some general questions about you writing the essay as well. Like now Hmm. you writing the essay, like some questions like what were you feeling at that time? What were you thinking at that time? Who wrote your essay? Now be very careful that you don't need to be confused over there कि ये क्या मैंने तो लिखा ही नहीं, ठीक है, ये तो किसी और ने लिखा है, ठीक है, don't be confused. You say Hmm. just simply that I wrote the essay. Okay, यहाँ पे ये भी नहीं mention करना, as you know that of course I was the one that wrote the essay. No, just say I wrote the essay. He can also ask you Hmm. what is the language of your essay. You can say Hmm. English. My the language of my essay was English. I wrote the essay in English. That's it. Hmm. Okay, like this. These questions are tricky, but they are the catchy questions, confusing questions. Okay. Hmm. Then he can also ask about the summary of the essay. What is the summary of the essay, or summarize your essay? How did you conclude your essay? Okay, and the timing. He can also ask you the question like you were not having much time at that time. So if you were provided more time, what would you have add in it? Okay. Now simply if you have something in your mind at that time, you can add like yes, I could have added this to my essay if I had more time. But simply you can also say that I have put all the requirements of my essay at that time, so I don't need to add something else in it. इस तरीके से आप Hmm. कंक्लूड भी कर सकते हो सिंपली, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें ऐसे के लिहाज से कोई भी सेंटेंस वो ले लेगा, ठीक है, और वो कहेगा कि Hmm. ये आप जब लिख रहे थे या ये सेंटेंस लिखने का मकसद क्या था, या ये सेंटेंस की सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे एस्से के अंदर, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई Hmm. डिसएडवांटेज लिखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे और वो कहता है, वो सेंटेंस बोलता है और कहता है कि ये आपने क्यों लिखा है, तो आपको पता है कि ये डिसएडवांटेज के पोर्शन में मैंने लिखा है, तो आप बोलेंगे कि मैंने जो डिसएडवांटेज लिखा है उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए ये सेंटेंस बहुत जरूरी था। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो डिफाइनिंग है, फॉर एग्जाम्पल Hmm. टेक्नोलॉजी क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम भी है, अगर हम लोग फोन यूज करें और आपने लिखा है कि यस इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, अगर वो पूछे कि यू रोट दैट टेक्नोलॉजी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाई डिड यू राइट इट, हाउ डू यू थिंक दैट इट वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे, तो आप कह सकते हैं Hmm. बिकॉज आई वाज राइटिंग दैट इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो दिस सेंटेंस इज माय इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस वेरी डिसएडवांटेज, ठीक है। Yeah, but it was necessary to put it here because I had to complete my word count as well. ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट रीजंस जो आपके माइंड में आते हैं उस वक्त आपने उसको उस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद आता है Yeah. आफ्टर essay portion there comes अच्छा इसके अंदर एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है कंक्लूजन का, ठीक है, essay के अंदर लाइक हाउ डिड यू कंक्लूड योर essay, ठीक है। और एक और चीज भी, मतलब अब वो जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन होता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर एसे, ये भी लाजमी क्वेश्चन आता है, ठीक है, Hmm. बिल्कुल सिंपल। जो जरा आपने टाइटल तो आपको आता ही होगा और कुछ आता है या नहीं, तो ये सिंपलेस्ट माना जाता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट दैट इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन। Hmm. नाउ इन पिक्चर डिस्क्रिप्शन
आपको पिक्चर को दो तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब होता क्या है, पिक्चर जब डिस्क्राइब करने वाले होते हैं आप, तो आपको ना 15 सेकेंड्स वो देता है, पिक्चर शेयर करता है आपके साथ स्क्रीन पे, और आपको 15 सेकेंड्स देता हम्म, है ताकि आप उस पिक्चर को एक दफा देख लो, उसको एनालाइज कर। अब जब एनालाइज करेंगे ना आप, हम्म, तो आपने दो तरीके से एनालाइज करना है। आपने देखी पिक्चर, ठीक है, एक वो हो गया फिजिकल कि क्या हो रहा है, कौन से कलर्स यूज हो रहे हैं, जी। ठीक है, उसमें कितने लोग हैं या नहीं है, दरख्त नजर आ रहे हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं, जो भी नजर आ रहा है, ये फिजिकल में आता है कि उसमें बनावट, वो हम्म, सामने क्या दिख रहा है। अब उसमें ना हम्म, एक होता है कॉन्सेप्चुअल चीज, एक है फिजिकल, दूसरा पार्ट है कॉन्सेप्चुअल। यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली एनालाइजिंग इट एज वेल, लाइक हाउ, if हम्म, there is if there is traffic, okay, तो आप वहां पे कहोगे ये ट्रैफिक है, इट मीन्स दैट, और फिर ट्रैफिक है और वहां पे आपने कलर स्कीम, कलर्स भी याद रखने हैं, लाइक कलर क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड में कलर क्या शो हो रहा है, हो सकता है अगर आसमान नजर आ रहा है, हम्म, ठीक है, और आसमान डार्क नहीं है, ठीक है, अगर डार्क है तो आप कहेंगे कि ट्रैफिक है, और यहाँ पे आसमान डार्क है, इट मीन्स दैट इट इज ऑफ टाइमिंग ऑफ द ऑफिसेज, दैट इज व्हाई इट हम्म, इज शोइंग अ ह्यूज ट्रैफिक, ठीक है। और अगर आप, ये सुबह का वक्त है, ठीक है, और ट्रैफिक वहां पे बहुत ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज ऑफिस टाइमिंग एंड द ट्रैफिक इज शोइंग दैट पीपल आर गोइंग टू देयर ऑफिसेज एंड टू देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स, ठीक है, इस तरीके से। अब वो जी। डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकता है आपसे, ठीक है, अब वो भी ना आपसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेगा कि अच्छा क्या नजर आ रहा है आपको, गाड़ियां नजर आ रही हैं, हम्म, कितने बाइक्स नजर आ रहे हैं, कितनी गाड़ियां नजर आ रही हैं, कितनी बसेस नजर आ रही हैं, कौन से कलर की नजर आ रही है, नो। आपने जब एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वो पहले आपसे पता है क्या करेगा, 15 सेकंड के बाद ना आपको उसको डिस्क्राइब करना है, खुद से डिस्क्राइब करना है, दो तीन सेंटेंसेस जी। के अंदर, कि पिक्चर में आपको क्या नजर आए। उसके बाद वो क्वेश्चंस स्टार्ट करेगा। क्वेश्चंस वो ऐसे हम्म, फिजिकल क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेगा, वो स्टार्ट करेगा आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। लाइक अभी इसी ट्रैफिक की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अगर गाड़ियां हम्म, नजर आ रही हैं तो आपसे पूछेगा कि आपके इलाके में क्या ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो आप वहां पे बोलेंगे नहीं, हम्म, अमूमन नहीं होती, लेकिन इस टाइमिंग में क्योंकि ये ऑफिस टाइमिंग है, तो लोग जो है जब जा रहे होते हैं तो इस तरह ट्रैफिक हो जाती है, ठीक है। या फिर वापस ही इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल आंसर आपने देना, ठीक है। वो ये भी पूछ सकता है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना कितना मतलब कितना नेसेसरी है, ठीक है, हाउ नेसेसरी इट इज टू फॉलो द रूल्स, ठीक है, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और मे बी डू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, या इन योर कंट्री डू दे फॉलो द रूल्स। इस तरीके के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब आपसे रिलेटेड करके वो क्वेश्चंस करेंगे, सही है। ये चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है टू प्रिपेयर दीज 4 पोर्शंस ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल, ठीक है। इसके अलावा आपका जी। कोई क्वेश्चन? नहीं, मुझे अब इसमें बस यही है कि इंट्रोडक्शन तो हो जाएगा, वो तो इजी होता है। प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरा जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कमजोर है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ उसमें? मैं और आपको ऐसे पार्ट को मुझे कितना टाइम देना चाहिए ताकि मैं उसको डन कर सकूं? मैं आपके पास अभी आपका हो गया, यहाँ पे हमारे साथ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मैं आपके साथ एक बुक शेयर करूंगी, ठीक है, और आप जी। उसमें सारे पार्ट्स दिए हैं, उसमें ऐसे पोर्शन, प्रेजेंटेशन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इवन द इंट्रोडक्शन पोर्शन भी वहां पे मेंशन्ड है, ठीक है। मैं रोजाना आपसे जी। मॉक्स लिया करूंगी, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जी। प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, आप इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है ओके। प्रेजेंटेशंस, मैं रोजाना आपको टॉपिक्स दिया करूंगी, दो दो टॉपिक्स दिया करूंगी, तीन तीन टॉपिक्स दिया करूंगी, जो आपको प्रेजेंट करने होंगे। पहले इस तरह होगा कि मैं आपको प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स जो है एक दिन पहले दे दिया करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको टॉपिक्स दे दूंगी, ठीक है, दो टॉपिक्स दूंगी जो हम्म, आपको कल मुझे प्रेजेंट करने हैं, ठीक है, हम्म, विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, 5 to 6 मिनट्स तक जानी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन, बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि जी। हमारे पास टाइमिंग होती है 3 से 5 मिनट, तीन अगर सिर्फ आप करेंगे ना तो वो भी हम्म, एक अच्छा नहीं जाता, लाइक आपने बस खाना पूरी की है, पूरा पूरा ही बताया है। आपको कम से कम 4 मिनट हम्म, से 5 मिनट तक करनी ही करनी है प्रेजेंटेशन। उससे के लिए अच्छा है कि जब जी। आप बॉक्स दे रहे हैं तो आप कम से कम 6 मिनट्स की, 7 मिनट्स की तैयार करें, ताकि जब एग्जामिनर के सामने आप रियल हम्म, टाइम में जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो, या फिर आपके पास आइडियाज ना हो, या आइडियाज बनाने ना आते हो, ठीक है, इस तरीके से। हम्म, खैर, उसके बाद ऐसे पोर्शन में मैं आपसे उस ऐसे से रिलेटेड, आपके पास ऐसे तो है, ठीक है,
उससे ही रिलेटेड आपसे जी रोजाना क्वेश्चंस किया करूंगी, ठीक है। और पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाऊंगी, पिक्चर्स डिस्क्रिप्शंस वहां पे आपको जो है कैसे करते हैं क्या करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, सही। इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी जी जी होगी, जी। ठीक सो है। व्हाट यू सजेस्ट कि जैसे मैंने 17 में किया था ये अभी अपना LRW, तो हम्म। कितने दिन में मुझे कर लेना चाहिए स्पीकिंग 17th टेस्ट, ऑफ ताकि मे, इशू ना आए? 17th ऑफ मे को आपने अभी किया है। जी। आई थिंक आपको, आपके पास अभी 28 डेज हैं, ठीक है ना। तो 15 डेज हम्म में, विद इन 15 डेज यू विल बी ऑलमोस्ट डन। लाइक अगर आप एफर्ट डालते हैं, मैं भी अच्छी सी आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी, ठीक है। तो हम दोनों जब मिल के कोशिश करेंगे तो 15 डेज आर मोर देन एनफ टू बी प्रिपेयर फॉर योर स्पीकिंग मॉड्यूल। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं। और मैंने अभी आपकी, क्योंकि थोड़ा सा जब आपने बोला तो एक्सेंट और वो सारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आई थिंक 15 डेज भी नहीं, मुझे लगता है विद इन 7 डेज अगर आप एफर्ट अपनी पुट करते हैं तो यू विल बी रेडी, ठीक है। आफ्टर 7 डेज वील डिसाइड कि आपको कितने दिन मजीद रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, या फिर अभी कर लेना चाहिए, ठीक है। जी जी ठीक। ओके, एनीथिंग एल्स नबील? नहीं नहीं, बस यही है, इतना काफी है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड कर लेंगे, तो आप मुझे फिर बताएं मैं किस तरह से करूँ चीजें, तो मैं कर लेता बस यही है, मैं अभी आपके साथ एक बुक शेयर कर रही हूँ, ठीक है। हूँ जी। You are you using your phone right now? नो, Uh, where are you taking the class? आई एम इन माय रूम। Okay, no, I am asking if you are using your laptop to take the class or your phone. Yeah, like for the next class I will use the laptop, because like my laptop is like in the down room, so I'm Okay, it's in fine, with it's my. fine. I am going to share with you the book right now, and then you can prepare it from there. Um just give me 1 minute. Okay. Okay, let me share my screen with you. Can you see it? Yeah. Okay. Now, this is a book that we have prepared. Mhm. It has the introduction part over here. If you can see the introduction part, the presentation part, and Mhm. also the essay portion, picture description. Got it? Now, what we have to do is we have to prepare using this book. It has Mhm. enough material for you to be prepared for your speaking module. Got it? Like, for example, over here, you can see that there are different questions written. Introduction Mhm. questions. Why are you learning English? How do you practice improving your English? What are the challenges that you face while learning English? Okay. How can English help you in the जी। future? These are the questions that I have already told you about. Okay. हम्म Now, what you have to do जी is you have to learn these answers. Like, learn these answers or make your own answers, but like this. What you have to do is, how do you have to make your answers? If you want to make your answers, I am telling you like how you have to make your answers. For example, here is the question. Um, how can English help you in the future?
you have to put at least 3 points. Like it will help me in different areas of my life. For example, if you are going to study in UK, it means that it will हम्म become your main language. All the notes, all the lectures will be in English, and if I learn English, it will be good for me to absorb or to gain the knowledge from there. Then you can also put that it will give me the path to communicate or conversate with different people. Okay, then you can also say that because in their English is a global language, and it will open new areas for me regarding my study and regarding my latest development in my career as well. इस तरीके से आपने आंसर करना, लाइक आपने जो भी बात करनी है। अच्छा, मेरे पास जो जूम का टाइमिंग है वो थोड़ा हमारा ना 40 मिनट्स का होता है। सही है? तो ये टाइम खत्म होने वाला है। लेकिन खैर, अच्छा, इस तरीके से आपने क्या करना है कि 3 पॉइंट्स उसको वैलिडेट करके देने हैं, उसको लाजमी बताने। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे देखिए जरा, क्वेश्चन है व्हाई आर यू टेकिंग दिस ऑक्सफोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसने रीजंस दिए हैं। द फर्स्ट रीजन that it is a requirement from a university. Second reason that it is like the exam results come early, like within 48 days, and it is very convenient for me and affordable for me. हम्म And the third reason is I can perform it from anywhere. I don't need to go to a specific center to perform it or to do it. Okay, this is हम्म, how you do it. You have to put at least 3 points to validate your answer. Got it? जी अब जी या तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो यहीं से प्रिपेयर कर लें, या फिर आप ऐसा करें कि अपने खुद से आंसर बना लेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन दीज वेज और दीज आइडियाज। ठीक है, विच जी जी बिल्कुल। वट एवर इज फिजिबल फॉर यू। अच्छा होगा कि अगर आप यही याद कर लें, विद इन 7 डेज आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, ओके। जी बिल्कुल। उसके बाद ये यहाँ पे आपके पास प्रेजेंटेशंस कुछ दी हुई हैं, ये। अच्छा जी, अरे प्रेजेंटेशंस है ना, डिफरेंट टॉपिक्स ये वो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी कुछ बच्चों को मिले हैं। ठीक है, डिफरेंट जिन्होंने परफॉर्म किए हैं टेस्ट, तो उधर से ही हम लोगों ने वो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स लेकर तो उधर कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह ऐड कर दिए। यहाँ पे हमने खुद से ही नोट्स बना लिए हैं उनके लिए, ताकि जो बच्चे नेक्स्ट लाइक स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं वो यहाँ से प्रिपेयर करें। सही। अब यहाँ से मैं जी आपके साथ मैंने बुक शेयर कर दी है। ठीक है, आपने करना ये है कि आपने टू टॉपिक, जो फर्स्ट टू टॉपिक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन है, ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर दैम। ठीक है ठीक है, कल मैंने आपसे मतलब उस बारे में बात ठीक, करनी है। कल उसके बारे में आपने मुझसे बात करनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे कोई क्वेश्चंस के या प्रॉम्प्ट्स दिए हुए नहीं है। क्यों नहीं दिए हुए? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे हर एक का अलग होता है। हाँ, उससे जो हम्म रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस हैं वो हमने मेंशन किए हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर देम। अब एक काम जी आपने ये करना है नबील, अभी आपने मेरे साथ अपना शेयर करना है। जस्ट वन मिनट। ओके, अभी आपने मेरे साथ अपना ऐसे शेयर करना है, और आप मुझे बताएं कि आपके पास समरी है ऑलरेडी, या सिनोनिम्स वगैरह आपको पता है, अपनी वोकैबुलरी आपकी प्रिपेयर्ड है ऐसे की? नहीं, मुझे अभी तो नहीं पता, वो देखना पड़ेगा ना पढ़ते पढ़ते। लेकिन जैसा कि मैं नोट कर रहा था उस टाइम पे, तो बहुत कॉमनली शब्द यूज हुए हैं सारे ना। ऐसा कॉमनली स्ट्रक्चर है, तो आई थिंक कि मुझे उसमें कुछ इट खास विल बी इजी प्रिपरेशन फॉर करनी ही यू, नहीं मतलब पड़ेगी। एज सच वो उसको इतना ज्यादा वो इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपसे कुछ ना कुछ उसके बारे में लाजमी पूछेंगे। सही। जी जी अच्छा, अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस। जी। ये मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है वैसे, ऐसे तो आप चेक कर लेना उसमें। sure, sure. I will check it out. Okay, देखिए, what is the title of or topic of your essay? ये क्वेश्चन मस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये हम्म देखिए, रिलेटेड आपका जो समरी कैसे करनी है, आपने प्लानिंग, आपने कैसे प्लानिंग की। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन लाजमी होता है कि व्हाट वर द चैलेंजेस व्हाइल यू वर प्लानिंग फॉर टू राइट योर essay। ठीक है, हम्म ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होता है। लाइक आप ये कह सकते हैं इसमें कि इट वाज नॉट इजी बिकॉज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज is not my first language, and I am not into writing as well. Like my creative writing is not that good. ठीक है, कुछ इस तरीके से करके हम्म
ठीक है. I was for like to be honest, I was feeling being challenged while writing appropriate examples. Maybe how to conclude it, how to put different, how to put appropriate advantages or disadvantages, or how to be reasonable in my essay. ठीक है, इस तरीके से आपने जो है आंसर बताना, इस तरीके से. उसके बाद अब जो है यहाँ पे उसने एक आपको जो है एक वो भी दिया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, एक एग्जांपल दी हुई है. टाइटल ऑफ ऐसे उसने दिया हुआ है, ठीक है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लर्निंग एट स्कूल, ठीक है. समरी ऑफ ऐसे दी हुई है, ओके. समरी कैसे बोलनी है आपने, मेन पॉइंट आपने बताना है, ठीक है, इस तरीके से. और लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया कि वो पूछता है, ठीक है. आपने कहना है इजी राइटिंग है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, स्पेसिफिक वर्ड्स ये वाले यूज किए हुए, ठीक है. और उसके अंदर आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ बस ये दैट्स एनफ इसमें. इस तरीके से होता है. सिनोनिम्स वो लाजमी पूछते हैं आपसे, स्पेसिफिक वर्ड्स वो आपसे वो सिलेक्ट करके आपसे उसके मीनिंग्स पूछते हैं, ठीक है. कॉन्टेक्चुअल भी पूछ सकता है, और वो दूसरी तरीके से भी जस्ट डिक्शनरी मीनिंग भी पूछ सकता है. ओके. व्हाट वाज ओके. योर रिएक्शन व्हेन यू वर राइटिंग अबाउट योर टॉपिक, ये भी क्वेश्चन है. और हाउ वर यू फीलिंग एट दैट टाइम व्हाइल यू वर राइटिंग, ठीक है. या फिर ये भी क्वेश्चन होता है जी. बहुत ज्यादा, लाइक कॉमन क्वेश्चन है कि if you are given the choice, what on what topic would you have written it, ठीक है. आपने अपना ऐसे, अगर आपके पास चॉइस होती तो आपने कौन से टॉपिक पे ऐसे लिखना था, ठीक है. हम्म. उसके बाद व्हाट इज द पर्टिकुलर एम ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है. जो सब्जेक्ट आप जो ये टॉपिक है, ठीक है, उसका एम क्या नजर आया, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं. सो इट विल बी इजी फॉर यू. जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो वो अच्छा. ये फाइनल है पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ठीक है. पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे पिक्चर दी हुई होती है, ठीक है, जैसे जी. जस्ट अ मिनट. सी, दिस इज अ पिक्चर. हम्म. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जैसे अगर हम लोग फिजिकली देखें ना, तो देयर इज अ टीचर, ठीक है. एंड foreground she is teaching the students, ठीक है. There are students and there are girls and boys in the class, and the teacher is teacher is looking very friendly, and she is actually explaining a map, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है, स्टडी ऑफ हाउ एसेंशियल इज डू यू थिंक इज द स्टडी ऑफ मैप्स, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है. या फिर हाउ एसेंशियल इज टू लर्न अबाउट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन हो सकता है. हम्म. कुछ भी वो करके पूछ सकता है, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है. तो इस तरीके वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है मैं कराऊंगी. अब ये फॉर एग्जांपल ये देखें आप, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, हाउ डू कलरफुल पोस्टर्स इन द क्लास एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस, इस तरीके से क्वेश्चंस. हम्म. ये वाले क्वेश्चंस लाइक अनरिलेटेड. अब यहाँ पे पिक्चर अगर आप देखें तो ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा आंसर कोई नहीं बता रहा है, या कोई ऐसा आंसर है नहीं, लेकिन वो बस पिक्चर को देख के उसे कुछ भी बताना शुरू करना है, उसने कोई भी क्वेश्चन करना है उससे. सही है. ओके. जी. दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास. सही है. इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, अभी आप अभी मुझसे पूछ लें, ठीक है. जी. नहीं, इसमें तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है. मैंने जो आपसे क्वेश्चन करना था वो था इस चीज के रिलेटेड के अभी फिलहाल दिमाग से निकल के अगर आता है तो मैं आपको फिर मैसेज नो, करता हूँ. इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन. जी. ओके. अच्छा, नबील, अब आपने ये जी. करना है, इंट्रोडक्शन के पोर्शंस, जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो आपको सारा कल तक प्रिपेयर होना चाहिए. कल में जब आपका कल से मॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे आपके, सही है. इसी तरीके से जी. रिकॉर्डेड मॉक्स होंगे आपके, सही है. उसके हम्म. बाद जो दूसरी चीज है यहाँ पे नबील, वो ये है कि आपने जो प्रेजेंटेशन पोर्शन है उसमें 2 प्रेजेंटेशन आपने मतलब वो आपको आनी चाहिए, आपने प्रिपेयर करनी है. उसके अलावा जो आपका ऐसे पोर्शन है उसमें आपको समरी में अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है. डिफरेंट मीनिंग्स आपको वर्ड्स सिनोनिम्स प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपको प्रिपेयर होने हैं, ठीक है.
और फिर पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, फर्स्ट जो इसमें पिक्चर है, ठीक है, फर्स्ट जी एंड सेकंड दोनों कर लें, दोनों पिक्चर्स आपको प्रिपेयर करनी है। जी ठीक है। ठीक है, डू यू हैव टाइम? हाँ बताएं। हाँ, टाइम है ना, तो बस टाइम के उस लिहाज से आपने बस प्रिपेयर करना है उसको। सही है। ठीक ठीक। That's it, जी Nabil. That was a class, and that was an introduction about the Oxford speaking module. ठीक है, अभी जी क्लास लेस देन 1 मिनट का टाइम रह गया, अभी किसी वक्त भी बंद हो सकती है। इट्स फॉर द जी फोर जी 40 ठीक है, मिनट्स कल इसी टाइम बात करनी है फिर कल। आई लेट यू नो। ओके ओके। ओके, ठीक, अल्लाह थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज।